नमो हराय देवाय महामायातिशूलिने तापसाय महेशाय तत्त्वज्ञानप्रदायिने नमो मौञ्झाय शुद्धाय नमः कारुण्यमूर्तये नमो देवादिदेवाय नमो वेदान्तदायिने नमः पराय रुद्राय सुपाराय नमो नमः विश्वमूर्ते महेशाय विश्वाधाराय ते नमः नमो भक्तभवच्छेदकारणायामलात्मने कालकालाय कालाय कालातीताय ते नमः जितेन्द्रियाय नित्याय जितक्रोधाय ते नमः नमः पाषाण्डभङ्गाय नमः पापहराय ते नमः पर्वतराजेन्द्रकन्यकापतये नमः योगानन्दाय योगाय योगिनां पतये नमः प्राणायामपराणां तु प्राणरक्षाय ते नमः मूलाधारे प्रविष्ठाय मूलदीपात्मने नमः नाभिकन्दे प्रविष्ठाय नमो हृद्देशवर्तिने सच्चिदानन्दपूर्णाय नमः साक्षात्परात्मने नमः शिवाय अद्भुतविक्रमाय ते नमः शिवाय अद्भुतविग्रहाय ते नमः शिवाय अखिलनायकाय ते नमः शिवायामृतहेतवे नमः सूत उवाच या इदं पठेत् नित्यं स्तोत्रं भक्त्यानुसंयतः तस्य मुक्तिः करस्तास्याच्चङ्करप्रियकारणात् विद्यार्थी लभते विद्यां विवाहार्थी गृही भवेत् वैराग्यकामो लभते वैराग्यं भवतारकं तस्मात् दिने दिने यूयमिदं स्तोत्रं समाहिताः पठन्तु भवनासाद्धम् इदं वो भवनासनम् इति श्रीस्कान्दे महापुराणे सूतसंहितायां बृहस्पतिकृतशिवनवरत्नस्तवः।